हाय माय नेम इज़ अब्दुल वहीद। मेरा नाम अब्दुल वहीद है। मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ और ये आपका यूनिट नंबर 7 है, द ब्लू मास्क। उसकी हम एक्सरसाइज कर रहे थे। वी वर डूइंग द एक्सरसाइज पार्ट 2, द ब्लू मास्क। ओके, तो इसका जो रिमेनिंग वर्क था, आई विल कंटिन्यू। हम इसमें एक्सरसाइजेस जो हैं वो किस तरह से भाई इसको सॉल्व करना है, तो अभी हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने छोड़ा था एग्जाम्पल्स। आई कंप्लीट दिस टेबल। इस टेबल को कंप्लीट करें विद अप्रोप्रिएट एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। ठीक है जी, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री जो है वो इसके साथ हम कंप्लीट करेंगे। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो इसको इस तरह से है जैसे ये है, kept much एंड kept more, kept most। ठीक है, तो ये सिंपल डिग्री है, ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, उसने काफ़ी रख लिया, ज़्यादा रखा, सबसे ज़्यादा रखा। So she sang beautifully, okay, normal, sang more beautifully and sang most beautifully। इसमें more और most missing है, आप इसमें ऐड कर लें। ठीक है, she sang beautifully, she sang more beautifully, she sang most beautifully। So slept little, slept less, slept least. Okay. So little, less, least. Well, looked good, looked better, looked best. Arrived early, arrived earlier, arrived earliest. तो भाई ये तो इस तरह से था। आगे है use above degrees of comparison in sentences as given in example। अब इसमें जो सेंटेंस बनाने वन जो है, I came earlier, he came earliest of all। तो सेंटेंस यहाँ पे बने हुए हैं। I kept much patience, he kept much patience, he kept more patience, he kept most patience, he kept most patience of all। She drew painting beautifully, she drew painting more beautifully than her friend, not ये वाला beautifully नहीं आएगा। She drew painting most beautifully of all। आगे she slept little, she slept less, she slept least of all। He looked good, he looked better than before, he looked the best of all। Shahzad arrived early, Shahzad arrived earlier, Shahzad arrived earliest of all। तो ये भी इस तरह की एक एक्सरसाइज थी, जिसका ब्लू मार्क्स से लेना देना कुछ नहीं है। तो ये एक्स्ट्रा उन्होंने ये इसमें काम डाल दिया है, हालांकि इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं पड़ती। ठीक है, और ये मुश्किल भी नहीं है, हम आसानी से जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को कंट्रोल करना सीखना चाहिए और ग्रामर को ठीक, यानी वर्ब का इस्तेमाल ठीक सीखना चाहिए। उसके बाद बाकी ये चीज़ें जो हैं ये छोटी छोटी पता नहीं कितनी है, सैकड़ों हैं। तो कौन कहाँ कहाँ से कौन कौन से ऐसी, ये तो वैसे ही है, हमें कभी ये टास्क दे दो, इसको सॉल्व कर दो, वीडियो गेम की तरह है। ठीक है, ये स्टेज कर लिया, अब ये करके दिखाओ, वो कर ली तो अब ये करके दिखाओ, वो स्टेज कर ली तो अब ये करके दिखाओ। सो एजुकेशन को इसी तरह से बनाया गया है और हमारे लिए बंदा फिर कहीं ना कहीं हिम्मत हार ही जाता है। तो अब टीचर क्या करें जी, हेल्प स्टूडेंट्स रिकॉग्नाइज वेरिंग पोजिशंस ऑफ एडवर्ब्स इन सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर काइंड्स एंड इम्पोर्टेंस। अच्छा ये मैं बता दूं, ये जो इस तरह की एक्सरसाइज हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होने वाली। ठीक है, हमें तो कभी सोचा ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं और इनकी कभी ज़रूरत भी पेश नहीं आती, और ऐसी इनकी कोई ज़्यादा बहुत मेजर कोई गलती होती भी नहीं है। आप बोलना शुरू कर दें, लिखना शुरू कर दें, तो दैट इज़ इनफ। ओके, अगर इस तरह से हम एक एक चीज़ को इस तरह डिटेल से देखेंगे फिर तो हम तो सारी ज़िंदगी लिखेंगे भी नहीं। इससे तो बेहतर है कोई गलती निकल आए, हमारी को ठीक तो हो जाएगी। Help them identify and use the degrees of comparison of adverbs, like a present, a perfect, a continuous tense। अच्छा ये क्या होता है जी, ये एक किस्म का फिक्र है भाई, प्रेजेंट होता है और परफेक्ट का मतलब है इसमें हैज़ हैव आएगा। ठीक है, और कंटिन्यूस का मतलब ऐसे इंग फॉर्म भी आएगी। हैज़ हैव के फ़ौरन बाद तो इंग फॉर्म नहीं आती, तो हैज़ हैव के फ़ौरन बाद बिन लगा के फिर इंग फॉर्म लगाएंगे।
तो ये ऐसे बनेगा, the structure of the present perfect continuous, there is सब्जेक्ट होता है, ऑक्सिलरी वर्ब मैंने हैज है बता दिया, और ऑक्सिलरी वर्ब भी इसमें बिन आ गया, फिर मेन वर्ब के साथ इंग फॉर्म आ गई, ठीक है, ये हैज हैव आ गया, बिन आ गया और इंग फॉर्म आ गई। तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट हैज बिन हैव बिन प्लस इंग फॉर्म, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। हैज हैव की वजह से परफेक्ट होगा, इंग फॉर्म की जगह से वजह से कंटिन्यूस हो गया। तो हैज बिन हैव बिन और इंग फॉर्म इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के होते हैं। There are basically two uses for the present perfect continuous tenses. ये हम उस वक्त ज़्यादातर यूज़ करते हैं जब हमने टाइम मेंशन करना होता है। इत से का जब वर्ड आएगा, सुबह से, दोपहर से, शाम से, 2 बजे से, ठीक है, तो 1965 से, तो उस वक्त हम इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं। An action that has just stopped or recently stopped. We use the present perfect continuous tense to talk about an action that started in the past and stopped recently. There is usually a result now. अच्छा, इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन इस तरह के सेंटेंसेस की होनी चाहिए। ता रहा है, मसलन वो पढ़ रहा है, ये ठीक है, वो सुबह से पढ़ रहा है, ये ठीक नहीं है, वो सुबह से पढ़ता रहा है, वो सुबह से पढ़ रहा है, ये सेंटेंस अंग्रेजी में कोई नहीं होता, ठीक है, वरना इसकी ट्रांसलेशन इस तरह से होने से ही इज रीडिंग सिंस मॉर्निंग, जब इस तरह का सेंटेंस बनाएंगे तो टीचर काट देंगे, ये सही नहीं होता, तो वो सुबह से पढ़ता रहा है, ठीक है, ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अदरवाइज आपको कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस का फर्क भी नहीं पता चलना। तो एग्जाम्पल है, आई एम टायर्ड नाउ बिकॉज आई हैव बीन रनिंग, ठीक है, so why is the grass wet now, uh, has it been raining, क्या बारिश होती रही है, ठीक है, you don't understand now because you haven't been listening, ठीक है, an action continuing up to now, अब तक जो एक्शन होता रहा है। We use the present perfect continuous tense to talk about an action that started in the past and is continuing now. Okay, this is often used with the for or since. वो सुबह से दोपहर से काम करता रहा, ठीक है। We often use for and since with the present perfect tense. आप for कहाँ इस्तेमाल करते हैं, since कहाँ में इस्तेमाल करते हैं। अगर तो हमें कैलकुलेशन, टाइम कैलकुलेशन ना करनी पड़े, ठीक है, वो सुबह से अब तक, अब ये कितने घंटे हुए हैं कोई पता नहीं, ठीक, कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, तो अगर कैलकुलेशन करना पड़े तो सिंस, ना कैलकुलेशन करना पड़े तो फॉर। बस 2 दिन से, अब ये 2 दिन में कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ती, 2 घंटे से कोई कैलकुलेशन नहीं पड़ता, कितने, 2 बजे से, इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगी, तो ये सिंस आ जाएगा, और 2 घंटे से तो फिर इसमें कैलकुलेशन करना नहीं पड़ती, फॉर आएगा। अब टेंस, रिसेंट परफेक्ट टेंस, ये पता नहीं क्या भाई, ऊपर से आई थिंक कुछ मिस होके यहाँ पे लग गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये पी आर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, so we use for to talk about a period of time of 5 minutes, 2 weeks, 6 years। इसमें जो है टाइम कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, इसके लिए फॉर लगेगा। We use since and to talk about a point in the past time, 9 o'clock, टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा, 1 जनवरी मंडे, since मंडे लगेगा, ठीक है कि नहीं। Examples, I have been reading for 2 hours, I am still reading now, okay। We've been studying since 9 o'clock, okay। ये जो है अभी तक काम जारी है, ये कोई गारंटी नहीं है भाई, ठीक है, हो सकता है खत्म हो गया हो सकता है जारी हो, ओके, ये कोई गारंटी नहीं है और इसका कोई चक्कर भी नहीं है इससे। क्या, अच्छा जी, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, ठीक हो गया। पुट फॉर और सिंस इन द ब्लैंक्स, तो ये हमें फॉर 3 hours, 7 p.m. since 7 p.m. फॉर 2 weeks, तो इसमें टाइम कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, सिंस मार्च इसमें क्या टाइम कैलकुलेट हो रहा है, फॉर लॉन्ग टाइम के इसमें टाइम कैलकुलेशन नहीं है, सिंस ही लेफ्ट स्कूल, अब किसको कितनी देर हो गई है, टाइम कैलकुलेशन इन्वॉल्व है सिंस,
टाइम कैलकुलेट करना पड़े तो since, ना करना पड़े तो for. Make 5 sentences using present perfect continuous tense and convert these sentences into negative and interrogative. लो भाई, तो पहले जो है सेंटेंस 5 बनाएं, फिर उनमें नॉट लगाएं, फिर उनके सवालिया फिक्र बनाएं. तो she has been studying for 2 hours. इसमें नॉट लग जाएगा. she has not been पहले हेल्पिंग वर्ब के साथ, और हैज को बाहर निकाल दे तो सवालिया हो जाएगा. आगे इसमें यही किया हुआ है, ये नॉट लगा हुआ है, और आगे सेंटेंस में हैज को बाहर निकाला हुआ है. ठीक है, अब इसमें पूरा नहीं आ रहा, तो चलिए मैं फिर सेंटेंस बना लेता हूँ. द बॉयज हैव बीन मेकिंग ए नॉइज फॉर एन आवर. ये इतना लंबा सेंटेंस धोखा देने के लिए बस हैव के साथ नॉट लगा दें. नेगेटिव हो गया, हैव को बाहर ले आए तो ये सवालिया होगा. आई हैव बीन सॉल्विंग सम सिंस मॉर्निंग. इसमें इसको तवज्जो ना दें, इधर नॉट लगाएं. आई हैव नॉट बीन सॉल्विंग, या हैव को शुरू में ला दें, हैव आई बीन सॉल्विंग, तो ये क्वेश्चन बन जाता है. द हॉर्स हैज बीन रनिंग वेरी फास्ट इंस्टेंट. यहाँ पे हैज के साथ नॉट लगाएं, और या हैज को शुरू में लें तो सवालिया बन जाएगा. नॉट लगाएं नेगेटिव. यहाँ पे भी वी हैव बीन लिसनिंग, कैसे वी हैव नॉट बीन लिसनिंग, नेगेटिव हो गया. हैव वी बीन लिसनिंग, ये सवालिया हो गया. इसमें यही किया हुआ है भाई. ठीक है, हैज शी बीन स्टडिंग, के स्टडिंग वाला काम भाई, स्टडिंग तो है ही कौन नहीं. शी हैज नॉट बीन स्टडिंग, ये इधर आ गया ऊपर में. So the boys have not been making, I have not been solving, the horse has not been running, और we have not been listening. Has have का सिलेक्ट हम करते हैं अगर यहाँ पे काम करने वाला एक हो और आई यू ना हो, तो फिर हम हैज लगाते हैं. बाकी सारी सूरतों में हैव लगाते हैं. तो ये है, एक है आई यू नहीं है हैज. द बॉयज ज़्यादा हैं, हैव. आई आ गया, आई के साथ बेशक ये एक है, लेकिन आई यू के साथ हम हैव लगाते हैं. दी हॉर्स एक है, इसलिए हैज लगेगा. वी हैव ज़्यादा है, इसके साथ वी के ज़्यादा है, हैव लगा. शी एक है, हैज. लड़के ज़्यादा है, हैव. आई एक तो है लेकिन आई है, इसलिए हैव. दी हॉर्स एक है, आई यू नहीं है, हैज लगेगा. वी ज़्यादा है, हैव लगेगा. इसी तरह से हैज हैव का भाई इसी तरह से हम इजीली सिलेक्शन कर लेते हैं. Writing skills. Write down the summary of the lesson. Focus on the following points. History of the mosque. Architecture. Importance. तो अभी हमने सारा ऐसे पढ़ा है, अब दो ऐसे पढ़ के फिर ऐसे लिखना है. ठीक है, बहुत लंबी है भाई, लेंथी ऐसे. चलो पढ़ लेते हैं. हाँ, राइटिंग स्किल्स हो गया जी. सुल्तान अहमद मास्क का आंसर. सुल्तान अहमद मास्क, also known as Blue Mosque, is one of the many manifestations of Muslim art and architecture in the world. The mosque is situated in Istanbul, Turkey. It was constructed during the Sultan Ahmad Sadafar Mehmed Agha. The royal architect designed the mosque so skillfully that even today this mosque is considered unmatched in its size, majesty, and splendor. There is also a heavy iron chain uh, hanging in upper part of the court entrance on the western side of the mosque. The Sultan had to lower his head to avoid hitting the chain, and also as the symbolic gesture to ensure the humility of the ruler in the face of the divine. The interior of the mosque at the lower level is decorated with ceramic tiles in form of tulips, whereas at gallery level, these designs represent flowers and fruits. The upper part is adorned with the blue paint. Mihrab is made of carved marble. The mosque is so designed that even when it is most crowded, everyone in the mosque can hear and the and
can hear and see you again see the Imam. Four minarets on corners represent the height of glory of the Muslim architecture. The mosque has become public place for the tourists. Mihrab is the most important element of the interior of the mosque, made of carved marble. A large number of visitors and Turks gather in the park facing the mosque to hear the call to the evening prayers. The mosque still remains to be one of the most frequent monuments of the world, frequented monuments of the world. Now, describe in your own words the architecture of any historical place in Pakistan. So, Badshahi Mosque is also there. Badshahi Mosque is one of the few significant architectural monuments built during Emperor Aurangzeb's long rule from 1658 to 1707. It is presently the fifth largest mosque in the world and was indisputably the largest mosque in the world from 1673 to 1986 when the Faisal Mosque was constructed in Islamabad. Although it was built late in the Mughal era in a period of relative decline, its beauty, elegance, and scale emphasize Mughal cultural achievement like no other monument in Lahore. Construction of the mosque began in 1671 under the direction of Muzaffar Hussain, Aurangzeb's brother-in-law and the governor of Lahore. It was originally planned as a re- reliquary to safeguard a stand of the prophets here. Its grand scale is influenced by the Jamia Mosque of Delhi, which had been built by Aurangzeb's father, Shah Jahan. The plan of Badshahi Mosque is essentially a square measure 170 meters on each side. Since the north end of the mosque was built along the edge of the Ravi River, it was not possible to install a north gate like the one used in the Jamia Mosque, and a south gate was also not constructed in order to maintain the overall symmetry within the courtyard. The prayer hall features four minarets that echo in miniature the four minarets at each corner of the mosque's perimeter. The mosque did not fare well during the rule of uh, Ranjit Singh, the Maharaja of the Sikh Empire. When Ranjit Singh took control of Lahore in 1799, the mosque's courtyard was used as a stable and the Hujra cells around the premier were occupied by the soldiers. Ranjit Singh himself used the adjacent Hazuri Bagh as his official royal court. When William Moorcroft of England visited Lahore in 1820, he recorded that the mosque as being used as an exercise ground for the Sipahi infantry. 20 years later, a moderate earthquake struck Lahore and collapsed the delicate marble turrets at the tops of each minaret. The open turrets were used as gun
emplacements a year later when Ranjit Singh's son, Sher Singh, occupied the mosque to bombard Lahore fort during the Sikh Civil War. After the British took control of Lahore in 1846, they continued to use the Badshah Mosque as a military garrison. It was not until 1852 that the British established the Badshah Mosque Authority to oversee the restoration of the mosque so that it could be returned to Muslims as a place of worship. Although repairs were carried out, it was not until 1939 that extensive repairs began under the oversight of architect Nawab Zain Yar Jang Bahadur. The repairs continued until 1960 and were completed at a cost of 4.8 million rupees. So, orally activity, this is a kind of dialogue, dear. So, hey, did you see what that boy did? Yeah, he threw a plastic bag into the street. He doesn't care about the environment. He's a little bug. He's a little bug. Do you care about do you care about our environment? Yes, I do. There's too much pollution. Everybody should care about environment. I agree. Hey, a little bug, pick up that trash. Look, he's picking it up. Thanks for caring about environment. तो ये एक अच्छा भाई डायलॉग है. थैंक यू टू topstudyworld.com एंड इसमें जो एक्सरसाइजेस थी रिमेनिंग एक्सरसाइज अनफॉर्चुनेटली वीडियो जो है वो बंद हो गई थी तो आई कुडंट कंटिन्यू अदरवाइज मोस्टली 1.5 आवर 2 आवर की वीडियो हो जाती है जब हम इसको करते हैं. इसमें बहुत सी जो हैं एक्सरसाइजेस टीचर्स के लिए स्टूडेंट के दोनों के लिए बेचारों के लिए टास्क होता है और ये करें ये करके दिखाएं ये करके दिखाएं. ये ऐसे ही है जैसे बिल्ली के बाल गिने बैठ गए एक बिल्ली के गिन लिए तो एक और पकड़ के ले आए एंड फॉर यूजलेस कोई इसका फ़ायदा भी नहीं होता. ठीक है, अब ये जो चीज़ें इधर सिखाई जाती हैं आगे हम सीख के दूसरों पे रोब डालेंगे उनको भी सिखाना शुरू कर देंगे और कहेंगे तुम्हारी इंग्लिश गलत है तुम्हारी इंग्लिश गलत है तुम्हारी इंग्लिश. परफेक्ट इंग्लिश तो किसी की भी नहीं होती. अच्छी इंग्लिश हो सकती है गुड इंग्लिश हो सकती है बिल्कुल परफेक्ट किसी की नहीं होती. हो सकता है किसी की हो मुझे पसंद ही ना आए. तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा परफेक्शन हाँ कोशिश करते रहना चाहिए इम्प्रूव करने के लिए लेकिन परफेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए. और हमें इस स्टेज पे जब हम इंग्लिश सीख रहे होते हैं हमें सिर्फ इंग्लिश की रीडिंग करनी चाहिए और सिर्फ अपनी ही स्टोरी की रीडिंग करनी चाहिए जो यहाँ पे दी हुई है ब्लू मास्क वाली. आगे जो हैंड में जो बादशाही मास्क और उसको अपने अल्फाज में बयान करेंगे ये सब आपने नहीं करना. आप इस पोएम इस जो लेसन है दी ब्लू मास्क वाला जो है इसकी जैसे सुल्तान अहमद मास्क और द ब्लू मास्क इसकी रीडिंग करें. एक दफ़ा कर लें फिर कर लें फिर कर लें फिर कर लें. आपको यू विल एंजॉय दैट और इसके बाद क्वेश्चन आंसर याद करने में भी आपको आसानी रहेगी और अगर आपको जो है इसकी ट्रांसलेशन करनी पड़ती है तो उसमें भी आपको बहुत आसानी रहेगी. तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ. अपना ख्याल रखें. शुक्रिया आपने इस वीडियो को देखा. तो इफ़ यू फाइंड इट गुड आप कमेंट्स में लिख दें कि ये अच्छी है ताकि मैं अपनी एफ़र्ट्स को जारी रखूँ. मेरे पास इंग्लिश के मतलब बहुत ही आसान जी हैं बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन चूँकि इनका जो जो है क्या कहते हैं मुकाबला ही कहेंगे इनके साथ कंपटीशन जो है वो इस ओल्ड जो ट्रेडिशनल मेथड है उसके साथ होता है. तो बहुत से लोग जो हैं टीचर्स और जो इंग्लिश सीख चुके हैं वो भी इसी को सपोर्ट करते हैं बट वो जो मैं बताता हूँ अमल उस पर करते हैं. तो इसलिए लेकिन जो मैं बताता हूँ वो कोई बताता भी नहीं है तो अमल भी उसी पे करना है. तो फिर जब ऐसी फाइनली है ही वो तो फिर जो है हमें उसकी तरफ जाने की क्या क्यों ना जाए. अब ये जो है बेसिक जब हम इंग्लिश स्टडी करते हैं तो उसका मतलब होता है हम इंग्लिश बोल सकें लिख सकें पढ़ सकें. तो अगर आप ऐसी बातों में वो ले सकें तो आप तो ज़िंदगी भर इंग्लिश लिख पढ़ बोल नहीं सकेंगे. ठीक है.
पता नहीं कब जाके हो सकता है किस्मत अच्छी हुई तो कोई टीचर टीचर भी अब उस वक्त बनते हैं जब हम टीचिंग में आते हैं। जब टीचिंग में नहीं आते तो हम टीचर भी नहीं बनते। अच्छा, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, ठीक है। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।